गवर्नमेंट लाने वाला है। ओम श्री परमात्मने नमः। लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। भक्तवत्सल भगवान को, श्री कृष्णचंद्र भगवान को, अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक परब्रह्म परमात्मा भगवान सर्वेश्वर को वांग्मयी मूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण नित्य पाठ अंतर्गत नवम स्कंद को आज 15औं अध्याय को पाठ आरंभ हुन गइरहेको छ। यहाँहरु दत्तचित्त भएर श्रवण गर्नु नै हुनेछ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। पञ्चदशोऽध्याय। श्री शुकवाच ऐलस्य चोर्वशी गर्भात् षडासन्नात्मजा नृप आयु श्रुतायु सत्यायुरयोत विजयो जयः। श्रुतायुर्वसुवन् पुत्रः सत्यायु च श्रुतञ्जय रयस्य सुत एकः जयस्य तनयो मिता भीमस्तु विजयस्य काञ्चनो त्रकस्तदा तस्य जन्नु सुतो गङ्गां गण्डुशीकृतयोऽपि वद जन्नुस्तु पुरुतत्पुत्रो बलाकाचात्मजो जगा तथा कुशस्यापि कुशाम्बोतनयो वसो कुशनाभ च चत्वारो गाधिराशि कुशाम्बुजा तस्य सत्यवतीं कन्यां मृजिगोया च द्विजा वरं विसदृशं मत्वा गाधिर्भार्गवमब्रवीद एकतः श्यामकर्णानां हयानं च नवर्चसां सहस्रं दीयतां शुल्कं कन्याया कुशिकाभयम् इत्युक्तस्तन्मतं ज्ञात्वा गतः स वरुणान्तिकम् आनीय दत्त्वा तान् अश्वान् उभयमे वराननाम्। स ऋषि प्रार्थिता पत्न्या स्वस्राः चापत्यकाम्यया श्रपयितो वैर्मन्त्रैश्चरुं स्नातुं गतो मुनि तावत् सत्यवती मात्रा स्वचरुं याचिता सती श्रेष्ठं मत्वा तया यच्छन् मातृमातुरदत् स्वयं तद्विज्ञाय मुनिः प्राह पत्नीं कष्टमकारसि घोरो दण्डधर पुत्रो भ्राता ते ब्रह्मवित्तम प्रसादितः सत्यवत्या मैवं भूतिति भार्गव अथ तर्हि भवेत् पौत्रो जमदग्निस्ततो भवत् सा चाभूत सुमा पुण्या कौशिकी लोकपावनी रेणु सुतां रेणुकां वै जमदग्निरुवाहयां तस्यां वै भार्गवऋषे सुधा वसुमदादया यव्याञ्जज्ञ एतेषां राम इत्यभिविश्रुता यमाहुर्वासुदेवां संहययानं कुलान्तकं त्रिसप्तकृत्वय इमां चक्रे निक्षत्रियां मयीं दुष्टं क्षत्रं भुवो भारम् अब्रह्मण्यमनीन सदा रजस्तम्भोवृतमहन् फल्गुन्यपि कृते मजि राजोवाच किं तदम्भो भगवतो राजनेरजितात्मभिः कृतमेन कुलं नष्टं क्षत्रियाणामवीक्ष्णसः। श्रीशुक उवाच हययानामधिपतिरर्जुन क्षत्रियर्षभः दत्तं नारायणास्यां स माराध्य परिकर्मभिः बाहून् दशशतं लेभे दुर्दशत्वमरातिषु अव्याहतेन्द्रियौजः श्रीतेजो वीर्यसो बलं योगेश्वरत्तमैश्वर्यं गुणायत्राणिमादय चचाराव्याहत गतिर्लोकेषु पवनो यथा स्त्रीरत्नैरावृतः क्रीडन् रेवाम्बसि मदोत्कटः वैजयन्तीं स्रजं बिभ्रदरुरोधः सरितम्बुजैः विप्लावितं स्वशिबिरं प्रतिश्रुतः सरिज्जलैः नामृश्य तस्य तद् वीर्यं दीदमानि दशाननां गृहीतो लीलया स्त्रीणां समक्षं कृतकिल्बिषा माहिष्मत्यां स निरुद्धो मुक्तो येन कबीर्यथा स एकदा तु मृगयां विचरन् विपिने वने यदृच्छया श्रमपदं जमदग्निरुपाविशत् तस्मै स नरदेवाय मुनिररणमाहरत् ससैन्यमात्यवाहाय अविस्मत्य तपोधन स वीरस्तत्र तद्दृष्ट्वा आत्मैश्वर्यातिशायनं तन्नाद्रियताग्निहोत्र्यं सा विलास सहयया अविर्धानि मृषेर्दर्पान्नरानर्तुमचोदयत् ते च माहिष्मतिं निन्युः सवत्सां क्रन्दतिं बलात् अधराजने निर्याते राम आश्रमागत श्रुत्वा तत्तस्य दौरात्म्यं सुकृदायिरिवात घोरमादाय परशुं सतूणं चर्मकार्मुकम् अन्नधावत दुर्धर्षो मृगेन्द्र इव यूतवम् तमापतन्तं भृगुवर्यमोजसा धनुर्धरं बाणपरशदायुधम् ऐणेयचर्माम्बरमर्कदामभिर्युतं जटाभिर्ददृशे पुरीं विशन् अचोदयादास्तिरता सपत्तिभिर्गदासि बाणाष्टिशतग्निशक्तिभिः अक्षोहिणी सप्तदशातिभीषण तारामयेको भगवान् सूदयत् यतो यतोऽसौ प्रहरद् परस्वतो मनोनिलौजा परचक्रसूदन ततस्ततः छिन्न भुजोरुकन्धरा निपेतुरुर्व्यां हतसूतवाहना दृष्ट्वा स्वसैन्यं रुधिरौघकर्दमे रणाजिरे रामकुठारसायकै बिभ्रीक्णचर्म ध्वजचापविग्रहं निपातितं हैहय आपतदृशा अथार्जुन पञ्चशतेषु बाहुभिर्धनुषु बाणान् युगपत् ससन्ददे रामाय रामोऽस्त्रभृतं समग्रणीतानेकधन्वे सुविराचिनत्समम्
मुहुस्वातैरजलान् मृदेङ्घ्रिपान् उत्क्षिप्य वेगादभिधावतो युधि भुजान् कुठारेण कठोरनेमिना चिच्छेद राम प्रसवं त्वयैरिव कृतबाहुश्रतस्य गिरिशृङ्गमि भारत् अते पितरि तत्पुत्र आयुधं दुद्रुर्भयाद अग्निहोत्रिमुपवर्त सवत्सां परवीरः समुपेत्याश्रमं पित्रे परिक्लिष्टां समर्पयत् स्वकर्म तत्कृतं राम पित्रे भ्रातृभ्येव च वर्णयामास तच्छ्रुत्वा जमदग्निरभासत राम राम मा भावो भवान् पापमकारसित् अवधीन्नरदेवं यत् सर्वदेवमयं वृथा वयं हि ब्राह्मणा तात क्षमयार्हणतां गतः यया लोकगुरुर्देव पारमेष्ठ्यमगात्पदं क्षमया रुचते लक्ष्मीर् ब्राह्मी सौरी यदा प्रभा क्षमिणामासु भगवान् तुष्यते हरिरीश्वर राज्ञो मूर्धाविष तस्य पदो ब्रह्म पदात् गुरु तीर्थसंसेवया चाम्बो जयङ्गाच्युतचेतन राज्ञो मूर्धाभिषेक तस्य पदो ब्रह्म पदात् गुरु तीर्थसंसेवया चाम्बो जयङ्गाच्युतचेतन हरि ओं तत्सदिति श्रीमदावते महापुराणे पारमहंससंहितायां नवमस्कन्धे पंचदशोऽध्याय हरये नमः कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः ओं पुराणपुरुषोत्तमाय नमः श्रीकृष्णचन्द्र भगवान् को लक्ष्मीनारायण भगवान् को जय जय श्री राधे।